So this question is very important towards any competitive exams. Okay, the question is, the equation of state of the some gases can be expressed as P plus A by V square whole of V minus B equal to RT. Here P is the pressure, V is the volume, T is the absolute temperature, and A, B and R are constant. The dimension of A are dash. The first option is correct, or second, or third, or fourth. Which one is correct answer? We have to calculate it. Okay. So that equation, first one, the equation is P plus A divided by V square V minus B equal to RT. This equation, according to the principle of homogeneity, according to the principle of homogeneity, according to the principle of homogeneity, so that means P, okay, so the principle of homogeneity, that is dimension of P is equal to dimension of A by V square. Okay, according to the principle of homogeneity. Okay, that means the term P plus A by V square, this term, okay, this term P plus A by V square has the same dimension, has the same dimensions, okay, has the same dimension, and P must be equal to, that means P must be equal to, P means pressure must be equal to A by V square. I have already written here A by V square. So the dimension of pressure is equal to dimension A by V square. We have to calculate A, so that A is equal to of V square. Okay, we know that dimension of pressure, already you know, dimension of pressure. So dimension of pressure means force per area, force per area. You know the dimension of force. Dimension of force is equal to m1 l1 t to the power minus 2, area is L square. So is nothing but m1 L to the power minus 1 t to the power minus 2. Okay, this is the dimension of pressure. Now we calculate dimension of volume. Dimension of volume. Okay, so the dimension of volume V is equal to length Q. Okay, LQ. So the V square is equal to L to the power 2, L to the power 6. So dimension of A is equal to, now substitute the value of P, pressure, which is equal to m1 L to the power minus 1 t to the power minus 2, and volume is L to the power 6. So dimension of A is equal to m to the power 1 L to the power 5 t to the power minus 2. This is your answer. Okay, so which one is correct option? So your option A is correct. So check it, m1 L5 t to the power minus 2, m1 L5 t to the power minus 2. Your option A is correct.
पिला माने देख गोटे क्वेश्चन देख ये जो क्वेश्चन मु सॉल्व कली बर्तमान स्टेप बाय स्टेप दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट टुवर्ड्स योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दियो ना कहीं तो डायमेंशनल एनालिसिस उपर प्रायतः क्वेश्चन आसूँ तुम्हें देखी पड़ो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जतिक तेणु ये टाइप क्वेश्चन तुम एग्जाम रे पढ़ुची तेणु या प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कले तुम ये टाइप क्वेश्चन को तुम सॉल्व करि पारिबो मोर आशा अच्छी ठीक अच्छे तो पिला देख ये क्वेश्चन रे कौन देती पिला सब मन रखि तुम्हें क्वेश्चन को भल भाव पढ़ा को चेष्टा कर जदि भल भाव क्वेश्चन न पढ़ुच तो कौन सी क्वेश्चन तुम आंसर कर ना फास्ट हूँ क्वेश्चन को भल भाव तुम पढ़ार अच्छी आ बुझार अच्छी कौन क्वेश्चन दिखाई ठीक अच्छे तो आम डेरी नक क्वेश्चन को पढ़ा द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P प्लस A बाय V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT तो ये गोटे टाइप रोटा इक्वेशन अच्छी को इक्वेशन मुझे तुमको कहूनी कि टाइप रोटा इक्वेशन अच्छी तेणु ये इक्वेशन को इक्वेशन P रो मीनिंग देछि प्रेशर V माने होछि वॉल्यूम T माने होछि एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ A B और R होछि माने होछि कांस्टेंट किंतु जो कांस्टेंट वैल्यू पर्टिकुलर से पचार ए रो कांस्टेंट वैल्यू बाहर करिया पई आ कहार पचारि नाही पचारछि कि कहार पचारनी जदि आर पचार था तुम आर भी बाहर कर टी तो टाइम दे देछि तेणु आर हूँ आम भी बाहर कर किंतु जेहेतु आम ए रो पचार तेणु ए रो आम फाइंड करेंगे तेणु चारिटा ऑप्शन पिला देखिए तेणु चार्टा ऑप्शन को ऑप्शनटा करेक्ट हम आम बाछा ये देखो जो P प्लस A बाय V स्क्वायर जो इक्वेशन मुझे लिखिली तापर हूँ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी जो अच्छी पे देखिए प्रिंसिपल होमोजेनिटी माने कौन होची तो यार प्रेशर जो डायमेंशन हम तो A बाय V स्क्वायर मिसिले से डायमेंशन तेणु यहाँ हूँ कौन प्लस अच्छी तेणु यार जहाँ डायमेंशन हम ये दुईटा टर्म को जो अच्छी यार डायमेंशन सहित प्रेशर डायमेंशन सहित सामान हम यहाँ हूँ वॉल्यूम अच्छी ना नहीं तेणु V माने कौन वॉल्यूम V माने से वॉल्यूम डायमेंशन सहित सामान हवा निहाती दरकार नहले डायमेंशन रंग हो तेणु ये कौन द टर्म P प्लस A बाय V स्क्वायर हाज द सेम डायमेंशन द P मस्ट बी इक्वल टू A बाय V स्क्वायर मुझे ऑलरेडी लिखिदे से वार्ड लिखिली ये देख पे P रो डायमेंशन प्रेशर डायमेंशन इज A बाय V स्क्वायर तो ए डायमेंशन फाइंड करा प्रेशर डायमेंशन वॉल्यूम स्क्वायर तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर समस्त जान फोर्स बाय एरिया ना नहीं फोर्स बाय एरिया तेणु फोर्स डायमेंशन पे जान फोर्स इज इक्वल टू कौन जो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आम यही फर्मुला को लिखिपर तेणु मुझेतु मुझे जानी प्रेशर सॉरी फोर्स डायमेंशन मुझे डायरेक्ट लिखिदेली प्रेशर फोर्स डायमेंशन पे देख आउ लेंथ एरिया मान से कौन लेंथ इंटू ब्रेथ ना बा लेंथ इंटू लेंथ तो दी थर लेंथ एरिया मैंने दी थर को एल स्क्वायर तेल यार आम सल्व कले डायमेंशन M1 L टू द -1 T टू द -2 ये आम डायमेंशन मिलगला प्रेशर सेमती डायमेंशन वॉल्यूम बाहर करें पे वॉल्यूम रोचे LQ अच्छी ना वॉल्यूम होची कौन तीनटा लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ हो ब्रेथ हो हाइट हो कि तीनटा जाक लेंथ तीनटा जाक ब्रेथ तीनटा जाक हाइट किसी प्रोब्लेम V स्क्वायर हेल्ले सेमती 4⁶ होगले तो ये सब्स्टिट्यूट करला फाइनाल आंसर ये हो पे जदि भिडियोटी भल लगुव लाइक कर शेयर कर आउ सब्सक्राइब कर जमार भूल ना अधिक वीडियो देखापी तुम्हें प्लेलिस्ट को जाओ बहुत सारा मु क्वेश्चन सॉल्व कर देछि बिट बाय बिट तुम्हें से बुझीपार और प्रैक्टिस कर एग्जाम रे भल मार्क रखापी चेष्टा कर जेकोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे थैंक यू फॉर योर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।